क्रंची लेयर है। इस लेयर को खोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी रेड लेयर ही है। कितना थिक देखिए। स्टोन का हमेशा एक साइड बहुत मोटा वाला थिक वाला ग्रिटीनेस रहता है और दूसरा साइड पतला।
फ्रेंड्स, आज का क्लीनिंग किया हुआ आइटम देखिए, 8 कोटेड बार था। ये ओनली वाटर वॉश किया हुआ है। किसी ने हमें कहा था कि उसको ड्राई क्लीनिंग करने के लिए बिल्कुल वाटर टच किए हुए बिना, लेकिन वो संभव नहीं है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मेरा छोटू सा एक पपी है, डॉगी है, पेट, तो वो थोड़ा सा एनीवे। तो ये मैंने देखिए, ये लेयर मैंने उठाया नहीं, ये क्रंची लेयर होता है और ये सब बोलते हैं मैम इसे मत उठाओ, ये बहुत क्रंची देता है, क्रंच देता है। देखिए, ये बहुत प्योर वाइट होता है, क्रीमी होता है और बीच में कोई ग्रिटी नहीं होता है। यहाँ से एक लाइन है, लेकिन ये मैंने अगर थोड़ा टाइम के लिए वाटर में डिप कर देते तो ये खुल जाता थोड़ा। अभी इसको खोलना बहुत मुश्किल है, टूट जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं खोला। अगर कोई बोलेंगे खोलने के लिए तो मैं ज़रूर खोल दूँगी। तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लीनिंग? आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं करती हूँ मैक्सिमम क्लीनिंग। हाँ, टाइम पर नहीं हो सकता, वो नहीं होते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा देर लेट होते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लीनिंग? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, सब लोग हमेशा सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखिए, डस्ट बस्ट इतना सही है, कोटेड वाला ये में कुछ भी प्रोडक्ट में डस्ट बहुत कम होता है, क्योंकि अंदर तो ग्रिटी होता ही नहीं है, बाहर का जो लेयर है बस वही है। इसमें आर्थिकनेस तो भर भर के है, पिंक से भी ज़्यादा। रेड पिंक में तो सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा। कभी एक बार दोनों ही डिप करके वाटर में डिप करके देख लेना कि इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं।